very helpful for your teaching as well as for your research. Today I will focus on the practical part. Everyone covered the theory part after listening the lecture, after attending this program. At the end, what did you get? That is very important. And from this class, I am sure after 1 and 30 minutes, I am sure you definitely learn something and that will be very helpful for you. So I will focus little bit on theoretical concept, more on practical concept also by doing the work. So now I'm going to share my PPT. One thing more important, the preferred language, do you like mix only English or anything? Preferred language by the participants? Because language is very important. If participants only understand English, then English is good. If they mix groups of people are there, then the mix is required. So can I speak in mix or English only? Mix? Yes, okay. I think my PPT is visible to everyone. Yes, sir, it is visible, sir. Okay, that's great. So, dear participants, today's topic for discussion is AI for feedback, grading, learning analytics, revolution, education. So now we people know about the latest education policy 2020 and almost all university implemented it. We know what is education 1.0. Our formal education started from education 1.0 in which there was no technology. Without the technology, education was given to students. Just we teacher memorize the concept in the mind and deliver in the classroom. So that education was टीचर सेंट्रिक, यानी कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है. आपको ज्ञान लेना है तो गुरु के पास जाना होगा, बिकॉज देयर वाज नो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द एजुकेशन. The use of technology started in education 2.0. Then that education become the student centric. A student can get knowledge from anywhere without the teacher. And in education 3.0, people focus on more knowledge and more technology. And then right now, education is 4.0, in which you have to use the concept of artificial intelligence, machine learning, latest technology in the educations. And AI change the scenario of education in the real world. But I will not focus on many more things, but only I will focus on feedback, grading, learning, analytics, and the revolution. AI for feedback, grading, learning, analytics, just see revolutionary education, what exactly AI is going to do in the education system. That discover how artificial intelligence is transforming educational landscape through intelligent feedback system, automated grading, and powerful learning analytics that empower both educators and the students. This AI concept is very, very helpful for the educators as well as to the student. You can make the feedback, you can grade the student with the help of AI in the minimum amount of time with the great accuracy. The growing challenges in the education. The first one, classroom capacity crisis. If problems we teachers are facing right now, what is that problem? The students are not coming in the classroom. That is the major challenges right now.
And why the students are not coming into the class? They are only coming to give the examination. You know what is the reason behind it? The good quality of material is available online. The students are learning from the AI tool. If you are giving the good quality of education in your classroom, then definitely a student will come to attend your class. If you are not giving good quality of education, then a student will not attend the class. They can get the good quality of education with the help of a technology. That is the main thing here. The classroom capacity crisis, that is the challenge. Increasing the class sizes and diverse learner need overhelp traditional feedback and grading methods, making personalized attention nearly impossible. If there are so many students are in your class, so giving importance to each and every student is impossible. The second one, time burden on educators. There is a time burden on the educators, on a teacher. Educators spend up to 70% of their time on grading and the feedback task. वी टीचर हम लोग सबसे ज्यादा जो वक्त अपना देते हैं ग्रेडिंग कैसे करना, फीडबैक कैसे देना, उसके अलावा भी so many work assigned by the institute to do the work, administrative work, drastically limiting their capacity for personalized support and meaningful student interactions. तो आज स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो बहुत कम है ड्यू टू overburden on a teacher investing their time on grading, feedback, etc. So if you save your time with the help of AI, you can give that time to the student you can interact with the student after saving the time from the making the grade. Deploy student progress. A student often receive delayed or a generic feedback, hindering their ability to make timely learning improvement and stay engaged with the coursework. Now see here, instant personalized feedback at a scale, 70% grading workload reductions, time save for deeper teaching engagement, 84% student prefer AI-generated detailed feedbacks. Means AI-powered tools are revolutionize how a student receive feedback by analyzing their work in a real time. अगर स्टूडेंट का जो इवेल्युएशन है, फीडबैक है, रियल टाइम में अगर उसको इवेल्युएट किया जाए, उसी वक्त इमीडिएट उस पे एक्शन लेकर उसका रेमेडी दिया जाए, दैट विल बी द गुड. हम क्या करते हैं, पूरे सेमेस्टर के बाद फीडबैक लेते हैं, तब तो वो सेमेस्टर निकल जाता है. इफ यू आर टीचिंग राइट नाउ एंड सेम टाइम in the real time you are getting the feedback from the student whether he or she got or not. If he and she not able to understand your concept, you get the feedback from the student at the immediate, you can change your strategy to teach. That is very important. This intelligent system provide immediate actionable insight on writing quality, structural coherence, and proper citation formatting. Leading platform like LearnWise AI and Feedback Fruits deliver elaborate aligned details. Feedback that a student prefer 84% of their over traditional delayed response. And the precision and consistency of AI feedback help a student to understand exactly where they need to improve. A student have to identify the weaknesses or teacher have to find the weaknesses in the student.
and immediately provide the solution to help the student. Now, see, learn why AI feedback or a grader. Learned why AI represents the cutting edge of educational technologies. Seamlessly bringing the gap between automation and personalized instructions. First one, seamless integration means integrate directly with the LMS like Canvas, a speed grader, bright space, grade to extra setup workflow disruption need for busy educators. Second one, intelligent feedback generation, in which what can you do? Generate a high quality rubric aligned feedback based on instructor annotation and established grading criteria, maintaining teacher control, proper adjust output. And the last one, actionable analytics provide a comprehensive grading insight and learning gap analytics that inform course improvement and target or a student support strategy. I'll show it practically how can you do immediate feedback, immediate grading, and how can you help the student with the help of AI tool. Enhancing the learning analytics with AI. You can enhance the learning of your student with the help of learning analytics. You can give the better educations to the student after the analytics. The first one, data synthesis. First, you have to do the data synthesis. AI-driven analytics synthesize vast data from LMS, learning management system, assessments and student interaction to identify at-risk learner and uncover hidden learner pattern. Second one, that is the adaptive assessment. How can you do the adaptive assessment? Intelligent assessment adjust difficulty in real time based on a student ability, creating truly personalized learning pathway for each and individual. And the last one, data-driven decision. Empower educator to make informed strategic decision to optimize curriculum design and dramatically improve the learning outcome. आज मैं सिखाऊंगा आपको कि चैटबॉट कैसे बनाते हैं। आप अपने पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए चैटबॉट बना सकते हैं जैसे कि चैट जीपीटी। How can they get the help from your own chatbot? You are a class teacher, you are teaching a particular subject. For a particular subject, you can make the chatbot. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने सब्जेक्ट का कैसे बनाएंगे और वो चैटबॉट आपको कैसे स्टूडेंट का ग्रेडिंग भी करेगा, फीडबैक भी देगा, सब कुछ करेगा। एंड यू कैन मेक योर ओन। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आप भी साथ साथ कीजिएगा। रिसर्च स्पॉटलाइट, Stanford's AI feedback tool, breakthrough findings. Stanford research developed an innovative AI system that automatically analyze and provide feedbacks. जिसे इन्होंने स्टैनफोर्ड ने बनाया है। You can make your own. बहुत आसान है, मैं आपको सिखा दूंगा आज कि आप अपना कैसे बनाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझने में, बच्चों को प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी होगी। The result very remarkable. Enhance the communication quality between the instructor and the student. There should be a communications between the student and the instructor. That is very important. Just one example. You are speaking in English, but the student are not understanding the English. So कितने भी अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, student will not get it.
That means there is a communications gap between the student and the instructor. If you are speaking in Hindi and a student don't know Hindi, they are not understanding. आप कितने भी मेहनत करेंगे उसको नहीं समझ में. देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द कम्युनिकेशन. आप क्या कम्युनिकेट करते, क्या वो स्टूडेंट उसको समझ पा रहा है या नहीं. जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. You have to take the feedback to know whether you are delivering in the classroom is understood by the student or not. So this research demonstrates AI transformative potential beyond simple grading, it reshaping how we foster communication and engagement in the educational environment. एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट को अपने साथ कैसे इंगेज करके रखे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या उसकी प्रॉब्लम को फीडबैक लेके कैसे पढ़ाएं कि वो समझ जाए. इफ यू आर ए गुड स्टोरी टेलर, इफ यू आर टीचिंग इन ए फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, a student can understand it very easily. You have to understand the thinking of the student. You have to find out the diversity in the student. मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है, 2 इंग्लिश जानता है, 2 हिंदी जानता है और 2 ग्राफिक जानता है. सो अगर आप हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी वाला तो समझ जाएगा, इंग्लिश वाला नहीं समझ पाएगा. देयर इज ए डाइवर्सिटी इन द क्लास. तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द फीडबैक कि विच लैंग्वेज यू प्रेफर. अगर मान लीजिएगा मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपुल है तो यू हैव टू स्पीक इन द मिक्स वे. नाउ सी ethical consideration and challenges. The first one, human judgment remain the essential. AI grading must complement, not replace human evolutions, especially for the complex creative assignments requiring nuanced judgment, culture understanding, and contextual interpretations. This is the first one. Second one, critical risk factor, algorithmic, that bias may be disadvantage certain student groups. Second one, in the critical risk factor, second factor, data privacy concern around sensitive student information. Third one, transparency issue in how AI make the grading decision. Last one, equity gaps in access to AI power tool. Next one, responsible implementation framework require ongoing algorithmic auditing, complete transparency and student about AI use, robust human oversight mechanism, and continue fairness monitoring to ensure the trust and the quality. That all should be the ethical consideration, and these all are the challenges. Now the future of AI in education, the first one, advanced AI integration. Emerging tool combine natural language processing and machine learning and computer vision to automate and personalize assessment at unprecedented scale. This is the first one. And the second one, proven result, university report faster turnaround time, dramatically reduce educator workload, and significantly improve a student learning experience and the satisfaction. This is all about the future education of AI. And next one, that is the continuous innovation. Ongoing technological advancement is driving more equitable, efficient, and insightful education practice that benefit the learner worldwide. Now let us see. After that, we will start the practical. I'll show everything practically. Visualizing the impact. First one, the traditional grading reality.
endless stack of paper to grade manually. A lot of paper are required when you are going to make the grade manually. जब आप मैनुअली ग्रेड बनाने जाते हैं तो बहुत सारे पेपर की जरूरत पड़ती है, ग्रेड शीट चाहिए, रूल क्या है, वट वीक ऑफ टर्न अराउंड टाइम फॉर द फीडबैक, आपको टाइम लग जाता है फीडबैक लेने में. इनकंसिस्टेंट इवोल्यूशन स्टैंडर्ड, आपको देखिएगा स्टैंडर्ड इवोल्यूशन कोई स्टैंडर्ड नहीं है. कहीं पे कहते हैं 8 का स्केल है, कहीं पे 6 का स्केल है. तो विच वन इज द स्टैंडर्ड वन? आप इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखिए तो आप सीजीपीए निकालते हैं आप, तो कहीं के 10 के स्केल पे है, कहीं पे 8 का स्केल पे है. सो एजुकेटर बर्न आउट एंड फिटिक्स limited capacity of personalization and AI power transformation. See, now this is the comparison. A streamlined digital grading dashboard, instant comprehensive feedback delivery, consistent rubric aligned assessment, real-time learning analytics insight, and personalized student support at a scale. This is the difference between the traditional grading reality and AI power transformations. So 15 hours saved per instruction per week on the average, 92 student satisfactions, and 35 learning gain increase in the performance metrics. Now see how this AI-based grading system works. AI-assisted grading increase speed, consistency between human oversight, student submission, automating grading, and feedback generation. You can also use the Gemini 2.5 and the hybrid in the grading. Now see here why AI in the grading process. What is the reason? What is the benefit after using the AI in the grading system? The first one, efficiency and the speed up. And what is the significance? First you have to understand the process of grading has undergone several changes in the recent past. Initially, teacher had to manually grade assignment by hand. The introduction of AI grading element helped teachers by relieving them from the tedious grading work and making the process of grading faster and efficient. The first reason, efficiency and speed up. What is mean by the speed? Why we are using AI in the grading? Because of efficiency and the speed. AI can provide multiple benefit with speed and the efficiency being the major one. Manual grading task of few hours to grade at the same time, the AI system can grade a large number of paper in a minute. AI in grading help the student receive the score and feedback quality quickly, which lead to the efficient learning. Also, AI-based grading system can increase the speed of marking significantly. Therefore, AI-based grading can be very helpful during the critical time. AI can help to complete the major share of the grading work, and this will help the teacher to work on the other part of the education process. Second one, consistency and the fairness. Traditional grading system often suffer from the human bias in the grading process. The AI-based system ensure a uniform grading process with the fair and the consistent grade in the every moment. Sometimes the human grader can form opinion based on their personal experience. This may create a bias in the grading process. Biasing in the grading may happen due to various reasons such as grader's mental condition, fatigues, or biased about the student ethnicity or the gender. However,
The AI-based grading process assign a score based on uniform criteria, ensure that all students are graded in the same way. This promote equality by giving grade to the student based on their performance. Rather than making it a subjective issues. So next and the second and last, personalized feedback. Personalized feedback is a very important part of the efficient learning process. Such type of feedback is not very often given by the teacher, especially when the size of the class is very big. AI-based system can give a specific feedback on the various aspects such as language, subject matter, and the writing structure. Artificial intelligence can also provide in-depth assessment for the student. This makes sure that the student recognizing the point they did well in and the area they need to work done. This helps the student to get the proper direction to improve. For an example, an AI-based tool, Turnitin, provide a specific feedback on the writing. This personalized feedback is crucial in the student writing skill improvement. And the last one, reduction in the teacher workload. The teacher can look at their health and avoid the possibility of honor by utilizing the same time saving by AI grading. Teacher can spend a good amount of time working on student materials, research project, or custom learning added for the student. So these four are the reason. That's why people are using AI in the grading process. Now we are going to start the practical work here. After giving some information, best AI grading tool for a teacher in 2025, 2026 started right now. The first tool you can use, that is the grade. This tool is not free. You have to take subscription, then you can use. This tool focusing on providing the feedback and support for the student. I'll teach you one by one each tool. Okay, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा. Second one, grade scope. You can use for your college or university for making the grade. What is the what grade scope offer? That offer a platform for grading, assessment, and the exams. Third one, at Cafe AI, that utilize AI to enhance the learning experience. And second, next one, Go Grader, that provide the automated grading, feedback, and the coding. Easy Grader, AI empower, AI assist, and the grades. Now we are going to start from one by one each tool. First, we can say the grade. How can you use the grade? Now see. Just go to the Google and click here grade. Grade. This is the online assessment tools. Grade. Now see here. Just click here. And now you have to enter your mail and all details, accept it, and accept the process. Okay, and now you can see join the here, and you can check your mail, you can get the verification mail and that one. But this all are the paid grade. So you can try it, but the important is that is the grade scope. So you can go with the grade scope. Just write down the grade scope. This is the grade scope. Click here. And this is the site of grade scope. Click here. And now
Just create the course. Click here to create the course. Now give the course name, course number. Suppose my course number is M101 and the course name is digital marketing. Digital marketing. And then you can give the descriptions about your course. This course cover various aspect of digital marketing. Okay, this is the description. And then you can select here theme, summer, fall, winter. And then you can select the year, just 26 and summer. And the school name, just you have to add here. And you can select the department, in which department you are, just computer science. And now allow a student to enroll by the course entry code. You can also allow the student by the enter by the course and the create the course. Now the course is created here. See here. Now course is created here. Then you can create the assignment. You can click on the assignment and just give the a quiz exam like homework and the institution budget, or you can bubble a seat, or you can give the online. Just click here the online beta version. You can give the assignment name. Suppose into assignment name is marketing, digital marketing assignment 1, and then enable anyone grading. If you are click here, anyone can grade it. And then you can give the release date. You can give the release date, suppose 10. Okay. And now you can due date, you can also give here 16. Allow the late submission, you can click here. Enhance the timeline, you can, as per your choice, you can enforce the time limit, or group submission, enable the group submissions here. And then you can stop, can edit the rubric, only instructions you can select here. And then you can create the assignment. You can create the assignment. And now the assignment is, and date is, release date is 11. And create here. Maximum time permitted 3, just you can assign. And now your assignment is created. Now see, your assignment is created. You can write the problem here. Just give brief description of digital marketing. Add the sub questions, you can add the questions, you can add the questions, and so many questions you can add at the assignment. And then save it. Okay, now you can also edit the assignment. Then you can assign the point 1, point 2, point 3, and so on. Now see here. Now you have to create a rubric. How can you create the rubric? Give brief description digital. And you can correct one, and now here you can add on. Add the rubric item and create the group or import. Just you can add here a rubric, and you can create also the group. You can also make the group here. Add on, and similarly for question 1 and question 2, you can also make your group, or just like add rubric item, create group, and the import the file, whatever is there. Okay, then go to here, manage the submission. You can also manage the submission, and then grade submission.
your grade is generated here. So this is one. I will not invest more time on this one. And then you can also see the statistics here. You can see the statistics and extension, grade request and re-request, regrade the requesting setting or review the grade request. In this way, you can do this. Now, so everyone aware about this. This is the little bit introduction about this. You can try yourself and you can learn. Now I am moving to the next step. Next, that is very important at Cafe AI. This is about the grade scope. Now you can see the and Cafe AI. This is a very important tool for you people. Now and Cafe and Cafe AI. This is the and Cafe AI. You can make the slide here. Suppose you want to make the slide for your student, just click here. Just create now. Suppose you want to make the slide, you want to make the teaching resources, you want to make the lesson plan, you want to make the chatbot. जो मैंने शुरू में कहा था आपको chatbot बनाना है. आप chatbot कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर one by one देखेंगे. आप यहाँ पे just click on the chatbot and now just describe what आपका chatbot क्या करना चाहता है. तो just you have to describe this chatbot will assist the student for reading material and question answer. Just you have to describe about your chatbot. You can write here whatever you want to write. जो आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ अपने chatbot के लिए लिख देंगे. Okay. Now click on the create or I have my own prompt. अगर आपका अपना prompt है तो आप यहाँ पे click करेंगे like this and you can write your prompt for this chatbot. So now we are going to create the chatbot. The field is required. Where is it remaining? Okay. So now you can give more data. Okay. This chatbot will help a student. Okay. Or you can write whatever you want. And now create the chatbot. Now this is the instruction. And then you can give here the capability. This is enable the file uploading. Just you can on and then embellish. And this option is on upgrade. This is not free. If you want to use this option, you have to upgrade it. And then the knowledge. Now you have to add your own file. Suppose you have a notes in Word file. So just you have to upload the file. First you have to upload the file from there. Suppose you have a by assignment, I have added. Then you can also give the web pages. Suppose you want to get the information from web page. So you can write here https www.google.com. So Google से भी डेटा ले लेगा. जहां से आपको डेटा लेना है just you can assign here. उसके बाद then you can knowledge upload another file, add the text notes. You can also add the text note. जैसे what is AI and you can give this one and then save. So first you have to provide the data to the chatbot.
so that a student can use that chatbot and get the information from here. You can also use here website, just like I'm adding some more website from there. Chat yahoo.com, yahoo.com, or any more search engine, like anything you can add here, no problem. Whatever you knowledge you assign to add here, just you have to add or upload the data. Okay, after doing this, you can save it and then give the name of your chatbot. Just I'm making the name of the chatbot because sir, because sir. That is the chatbot name. A student can use that because sir chatbot. Yeah, sir chat GPT, chat GPT. Okay, and now you can assign the library or add the folder, then save it. Now your chatbot is ready. Your chatbot is ready. Now see all instruction given, and now click here, test me out, and now you can just add a start chatbot. देखिए नाम आ गया, ये chatbot का नाम आ गया और start chatbot. अब इंटर योर नेम. मैम अनुपमा मैम बताइए क्या सर्च करना चाहते हैं. देखिए डेटा एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं. योर नेम, जस्ट आई एम एडिंग योर नेम, अनुरूप मैम, अनुरूप मैम. Okay, this is the name, and just Yes, sir. tell me the question, ma'am. So what are the 4 P's of marketing? What are 4 P's of marketing? P's of marketing? Spelling is okay. Now see. Now see how this chatbot is working. It got or not? Now see, I'm telling where, just I'm telling yes. Now 4 P's of marketing. You got it? The chatbot was asking and confused to get the answer. Now it's okay. Any more question? Ma'am, any other participant? Ask the question from Vikas Sir chatbot. This name of the chatbot is Vikas Sir GPT. This is the chatbot, not the GPT. This is the Vikas Sir GPT. Okay? Sir, my question will be how Mansab sir does all this. Okay. just who is Professor Mansaf Alam? Yes. अभी कह रहा है कि हमने डेटा नहीं दिया था. देखिए हमने डेटा अभी उसे अपना वेबसाइट अगर ऐड कर देते तो आ जाता. चलिए करते हैं. अब करते हैं व्हाट इज डिजिटल marketing, because you have to give the data, proper data. See, हम एक ही सोर्स दिए थे, गूगल का सोर्स दिए थे. अब हमने अगर अपना दिया था, देखिए अच्छा देखिए देखते आप आल ले लेगा. टेल अबाउट प्रोफेसर मनसफ आलम. अभी देखते हैं क्या करता है. अच्छा नाम देखिए, आई डोंट हैव डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेसर मनसफ आलम बियॉन्ड दिस वाज मेंशन इन द सिस्टम, बिकॉज हमने अपने सिस्टम में मनसफ आलम नहीं डाला है. यानी कि जस्ट चैट जीपीटी व्हाटएवर, if you are giving the data to the chat GPT in your database and data is available, then give the answer. अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इस चैट जीपीटी को एडिट करेंगे. अब मैं अपने यूआरएल, वेबसाइट की यूआरएल डाल देंगे तो फिर ये रिजल्ट हमारे पास मिल जाएगा.
अब हम चलते हैं यहाँ पे बैक में। देखिए अब तो चैट जीपीटी बन चुका है, डेटा आपको देना था और डेटा ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इस तरह से आपको किसी को डाउट है कि इसमें ये जो डेटा आपने वहां दे दिया है तो उसी डेटा से लेगा, चैट जीपीटी या कोई भी है, डेटा इज रिक्वायर्ड। चलिए और देखते हैं, गूगल से तो दे देगा। मैम और बोलिए सर, कोई क्वेश्चन, एनीवन? सर कोई Sir, क्वेश्चन what बोलिए। chat GPT? Sir, question is what chat GPT cannot do? व्हाट चैट जीपीटी, व्हाट चैट वी कांट Do. डू। देखिए सर रिजल्ट आ गया। अब बताइए रिजल्ट सही है Yes, sir. गलत है? Yes, sir, सही है। तो इससे क्या हुआ कि आप अपना चैट जीपीटी बना सकते। अब बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम चैलेंज क्या है आज के डेट में कि डेटा कहां से आएगा आपको। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनके पास तो डेटा है। अब देखिए हमने जितना डेटा दिया है उसी डेटा से हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो चलिए आपने चैट जीपीटी देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया कि कैपेबिलिटी को अपलोड करना है। अब देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब हमें असाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट को देखिए क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड दे देंगे, ये चैट जीपीटी के लिए उसका आपका असाइन चैट जीपीटी हो जाएगा। यानी स्टूडेंट क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और कर लेगा, या गूगल क्लास पर चले जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर चले जाएंगे, या कॉपी लिंक आप उसको दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हमने इसका कॉपी लिंक किया, अब यहां से हट जा रहा है, अब हम एक ब्राउजर खोलेंगे। अब देखिए ब्राउजर है, हम अपने चैट जीपीटी का यहां पर लिंक दे दिया, अब हम क्लिक कर दिया। अभी देखिए हमारा चैट जीपीटी ब्राउजर में खुल गया, नहीं गो टू होम, कुछ मिस्टेक हो गया। अब ये देखिए यहां से क्रिएट कर लेंगे, तो हमारा चैट जीपीटी ये है। देखिए चैट जीपीटी बनाया था मैंने, ये चैट जीपीटी। अब हम इसको एडिट भी कर सकते थे। अब देखिए जो मेरे बारे में नहीं आ रहा था, हम उस डेटा को असाइन करने जा रहे हैं कैपेबिलिटीज में या नॉलेज में। नॉलेज में इनहेंस कर देता हूं। अब हम नॉलेज में इनहेंस कर देता हूं। अब हमारा वेबसाइट है, अब देखिए हमारे बारे में बता देगा। अब ये मेरा साइट है, हम इसको ऐड कर देते हैं और जब इसे पूछेंगे तो जवाब देगा हमारा। अब हमने यहां पे ऐड कर दिया, ओके। अब यहां पे डेटा हमारे पास मिल गया, हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 यूआरएल है, देखिए 3 यूआरएल हमने डेटा दिया है। अब हम देखते हैं यहां पे, अब इंटर मान लेते हैं, हम किसी और का नाम लेते हैं, विकास सर का, रोहित सर का ले लेते हैं, रोहित। अब ये नाम हमने रोहित सर के नाम से बना रहे हैं चैट। स्टार्ट चैट, send the message. Who is Professor Mansaf Alam? Now see sir, now the result is here. बिल्कुल यानी सर पहले बिल्कुल। रिजल्ट, जी सर, पहले रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि डेटा वाज नॉट इन द चैटबॉट। राइट। अब हमने यूआरएल डाल दिया और जैसे ही पूछा ये बता दिया, क्योंकि डेटा का खेल है सर। नो डेटा नो एआई, मोर डेटा मोर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चैट जीपीटी आपने सीख लिया कैसे स्टूडेंट के लिए बनाएंगे। अब हमें आगे बढ़ते हैं, अब क्रिएट। अब हम दिखाते हैं चैटबॉट, देखा आपने सर। अब इसमें क्या करना है कि हमें पीपीटी बनाना है अपने स्टूडेंट के लिए, या समरी नोट बनाना है, इमेज बनाना है, स्पीच करना है, यूट्यूब। अब यूट्यूब है सर, अब यूट्यूब के जो वीडियो है उससे क्विज बनाना हमें, या यूट्यूब को समराइज करना है। तो पहले हम देखते हैं कि स्लाइड का कैसे बनता है। पहले अब देखिए स्लाइड बनाना है आपको, यहाँ पे स्लाइड का बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। अब देखिए जो मान लिया कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कितना करना है, नंबर ऑफ स्लाइड आपको बिलो 10 करना है, बिलो करना है। लैंग्वेज कौन सा करना है आपको, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम, जिस लैंग्वेज में आप पीपीटी बनाना चाहते हैं। तो अनुरूप मैम बताइए किस लैंग्वेज में बनाना चाहेंगे, हिंदी में
इंग्लिश में? सर इंग्लिश ही सही है सर. इंग्लिश है. हाँ. ओके. सो हम इंग्लिश यूके है, इंग्लिश में करते हैं नॉर्मल यूके. ओके. एंड नाउ जस्ट गिव द इंटर द टॉपिक. किस टॉपिक पे बनाना है पीपीटी? टेल मी मैम. सर सस्टेनेबिलिटी. Sustainability. Okay, ma'am. Anything more? You can also add the text, web. You can also take the web from the website. You can also paste your text. Suppose you want to make a PPT on the material which is available with you. Okay, so you can paste here, or you can give the topic only, or you can also give the web page, and then, or you can also give from here, go to the file and take the file from your disk, hard disk, to make the file. So now just create the slide disk. Just specify the topic and then create here. But this feature is upgraded feature. It is not free. Okay. So this one. Next one. Suppose you want to make the summary note. Summary note. Just you can add the file here. Topic same. You can give the text. Or you have a file and you want to make the summary of that file. So just I'm taking a file. Just I'm taking here just this file and specify the instruction. So just you can give here, this is the optional, make one paragraph summary. And then you can also check your language, in which language you want to make the summary. Whether your document in English, any language, and you can make the summary in any other language. So just I'm selecting here language and then generate summary note and try free. So ये क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट का एक समरी नोट बनाकर दे देगा. You can make the page summary for one page, half paragraph, and now see this summary page is generated. Next one, that is the very important. You have a YouTube video, and from YouTube video you have to make the quiz, make the question. So suppose just this is your YouTube, and just give the URL here. Suppose I have some videos like just I'm going to take the videos from my site and will make the question on it. Just I am taking this one and copy the video URL here, giving here URL, and then click here to make the question and the quizzes from the video. It is uploading here, and this will just sometime, कभी कभी आपको क्या होता है, आपको वीडियो है, वीडियो से आपको क्विज करना है, तो वीडियो से कंटेंट उठाकर टेक्स्ट में ये क्विज बनाकर आपको दे देगा. थोड़ा समय लगता है इसको अपलोड करने में, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर 10, 20 जितने भी आपको क्वेश्चन चाहिए आपको ये बनाकर आपको दे देता है. तब तक हम इसको, अभी अपलोड हो रहा है, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं इस पे. सो ये हमारा चैटबॉट था. एंड देन इसमें आप क्रिएट, आप देखिए उसके बाद यू कैन ऑल्सो रीडिंग एक्टिविटी, क्लिक ऑन द और रिसोर्सेस. अब देखिए ये भी अपग्रेड करने के बाद मिलेगा टीचिंग रिसोर्सेज. यू कैन टेक हियर फ्रॉम, you can write the topic, any topic, and you can find the article, slide, video, and the worksheet. मान लीजिए कि just I am telling the sustainability,
sustainability. Okay, and then you can find the resource. लेकिन ये भी आपका अपग्रेड वर्जन है, इसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तब इसको आप कर सकते हैं। ये हमारा किधर चला गया? ओके, जो वीडियो अपलोड हो रहा था। ओहो, सेशन एक्सपायर कर गया। The fail load to translate. Okay, any video I'm taking just here, just take the video URL. हमने सेशन को कर दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब ये वीडियो अपलोड होकर हमारा क्विज करके दे देगा। अभी किसी के जहन पे कोई सवाल आ रहा, पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सवाल के लिए, अभी 2-3 टूल और बताने के बाद, कि ओके, देन AI फ्रेश कार्ड टीचिंग मिशन, AI क्विज मेकर यू कैन ऑल्सो यूज। Just AI quiz maker, you can also make the quizzes here. Again, अच्छा वहीं से जाएगा आपका, एक ऑलरेडी है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप देखेंगे अब आ जाएगा। तो जैसे एक बार अपलोड होगा तो फिर क्वेश्चन बनना अपना शुरू हो जाएगा फटाफट। क्योंकि वीडियो को सिंक्रोनाइज करता है उसके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये शायद वीडियो बड़ा था क्या, कितना देर का था? ये छोटा वीडियो ले लेता हूं मैं यहाँ पे। जस्ट कॉपी द वीडियो URL। प्रॉब्लम कर रहा है, वो ना फटाफट आ जाता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, उसके बाद आपका क्विज करके दे देगा। हम दूसरा वीडियो ले लेते हैं। एक बार अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, और ले लेता है। आज प्रॉब्लम थोड़ी सी कर रहा है ये, हो सकता है ग्लिच हो उसमें। सो इस URL से आपको वीडियो करके मतलब क्विज करके दिखा देगा। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए आप उसको, तो आसानी से बन जाता है। ओके, चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो जाएगा। अभी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम या वीडियो एक्सेस नहीं हो रहा हमारे यहाँ। कई दफा क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी में वीडियो एक्सेस करने के लिए अलाउड नहीं होता है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो। लेकिन आप करके देखिएगा, आपके पास आ रहा है, एक्सेस हो रहा है कोई सा वीडियो। ओके, चलिए तो हमने इसको देख लिया। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, तब तक चलता रहेगा। नेक्स्ट है लेसन प्लान। क्लिक ऑन द लेसन प्लान और यू कैन इंटर द टॉपिक सिमिलरली, चाहे वो पेस्ट कर दे, चाहे वेबसाइट है या फाइल। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन देंगे। सर्च ए गूगल लेसन, सर्च आपने कनेक्ट फॉर द गूगल लेसन रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड और ऑप्शन लैंग्वेज, एंड यू कैन क्रिएट। सपोज ये टॉपिक हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ ऑप्शन दे देंगे, और यहाँ पे क्रिएट द लेसन प्लान। नाउ यहाँ पे लेसन प्लान क्रिएट हो रहा है। अब देखिए आपका लेसन प्लान यहाँ पे बनकर तैयार हो गया।
अब ये देखिए कि आपका लेसन प्लान यहाँ पे बनकर तैयार हो गया. You can see here. मैं दूध पाना है बस तुम तैयार हो जाओ. Now see here. Now your lesson plan is ready here. You can click here. Digital marketing for handy guide and ये whatever. So see you आपका ये lesson plan यहाँ पे तैयार हो गया. तो similarly you can also make the summary note and AI image. You can also make the image here. Just tell me the description of a image you can choose. रितिका मैम बताइए कोई इमेज बनाना है. Just tell me description, the image and the choose a style. कोई भी स्टाइल है उसमें सेलेक्ट करना है. स्टाइल कर लिए सेलेक्ट किए and just tell me make image of. बताइए मैम किसका. नो आइडिया. इमेज ऑफ हम बताएं ऑफ यूनिवर्सिटी एंड देन जनरेट. लेकिन ये भी फीचर अपग्रेड फीचर है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते. उसके बाद यूट्यूब वाला आया है और देन आफ्टर दैट ग्रेडिंग. नाउ क्रिएट ए असाइनमेंट ग्रिड and then just explain the assignment with the specific details about the student. You can write here. Then grading in instruction you can give here. Then rubric आपको यहाँ पे देना है. Create the upload the whatever rubric आप you can add the rubric. rubric को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. लैंग्वेज यहाँ पे कर देंगे and then create the grade. So this is required here and you can also write the assignment, basic assignment. Then you can give the instruction, give 1 point to each question point, okay, and then create. Now enter the name MN library or you can add the folder to make the grade. And now your grade is ready here. Grade instruction 1 point, basic grading. So you can responses, you can like this one, add the submissions, you can add the submission, generate the feedback here. You can give the name, aim, and then generate the feedback. So you can give the text or you can give the file. You can add the file like this one, any file, interview, and then generate the feedback. Like this, you can generate the feedback. So now the file is uploaded. Now see here, what did well? The feedback is generated here automatically. Just a feedback is generated. So you can copy, you can export. If you want to export here in the Google Docs or the Microsoft Word, so you can export your feedback. Then, okay, now this interview question submissions and this one. So in this way you can assign the grade. Now I'm going to move to the next tool because of time कम है हमारे पास से. I think 20 minutes रह गया, हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे. तो नेक्स्ट टूल है हमारा, नेक्स्ट टूल है गो ग्रेडर एंड द इजी ग्रेडर एआई. अब हम इजी ग्रेडर एआई को यूज करने जा रहे हैं. नेक्स्ट है इजी ग्रेडर एआई. Easy Grader AI, just you can click here and get a start here. अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास देखिए डेटा जो है, you are going to make the grade. If you have a data in the Google Classroom or a Canvas या Logi या add manually. You can also add manually. Just I am going to take the data from the Google class. Just I am going to take the Google class I have imported. I have a data from digital, just taking the data from the, and then assignment, all data imported here. All data on a Google class, it is imported. And now continue to grading system. Click here. Now you have to customize it for the elementary,
middle school, high school, and the college. Just some selected the college, and you can use the language, preferred language. You can give the feedback details, medium, short, and detailed. Grading instance is easy, normal, or strict. Just you have to select here. Just I'm going to give the normal. Advanced rule you can add from here. Easy Gentle will assign a score defined in your rubric level. So just you click here. Just you have to assign the rubric and select the rubric star. Now you have to select the rubric. And just अगर आपने rubric को बनाया है तो ठीक है, हमने ये बना रखा है, या add the rubric. Just you can select here. Just this is the rubric. You can select here anyone, or you can make your own. Just I'm selecting this one. This is the rubric for this question, purpose, organization, this point, this, and so many rubric you can make, or you can edit. Okay, so now come back here and then click here, class name, this one, assignment, again I'm repeating. Okay, this is the assignment. Then go to create, just select here and then select the rubric. Now you can also create the new rubric. So just I'm going to build with the AI. You can create from the file, you can create from the frame template, you can build from the scratch. Just I'm going to make the rubric with the AI. And now you can continue. Rubric will be ready for the grading. अब देखिए यहाँ पे ये रुब्रिक बन गया है. आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर दिया. यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आप ऐड करना चाहते हैं. मोर इंटरेक्टिव and you can assign the marks 3 point, 4 point, okay, 1 point, 2 point, 3 point. You can add जितना आप चाहे उतना रुब्रिक को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद ऐड क्राइटेरिया, you can also add the criteria and then create and save the rubric. Okay, you can also delete. Okay, and now you can add or delete. This is your rubric of design, and then create. Now save. Save each grade level within a criteria. Okay. Now create and the created, and now I selected this one. Okay. Now make the start grading. Just I am making the grade for the student. And now see, now this could not import following submission. ये कुछ सबमिशन ये रिपोर्ट दे दिया कि यहाँ पे ये सबमिशन नहीं है. हमने कहा कि ओके, नो प्रॉब्लम, एंड देन स्टार्ट ग्रेडिंग. अब ये ग्रेड बनाकर आपका दे देगा. अब ये सबमिशन को इसने एक्सेप्ट नहीं किया. तो इस तरह से आपका यहाँ पे ग्रेड बनकर हमारा तैयार हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे तैयार हो गया होगा. अब यहाँ पे हम देखेंगे मैट्रिसेज. अब मैट्रिसेज आप देख सकते हैं यहाँ से. यहाँ पे आपने ग्रेड देख सकते हैं यहाँ से. अब देखिए ग्रेड बनकर तैयार हो गया. इनका आपका ग्रेड है
अब देखिए ये ग्रेड 1 का तैयार हो गया, ये कब ज्वाइन किए थे, और इस तरह से ग्रेड में यू कैन रिव्यू द ग्रेड ऑल्सो। अब देखिए ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था ये, और सजेस्टेड आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, मार्क एज ए रिव्यू कर सकते हैं, रीग्रेड कर सकते हैं, एक्शन में आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और रीग्रेड कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद आप टीचिंग टूल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, एआई डिटेक्टर है। अगर वो नोट्स दिया है और चैट जीपीटी से बनाया है तो उसको फाइल को सेलेक्ट करेंगे और डिटेक्ट कर देंगे, तो ये बता देगा कि एआई से जनरेटेड असाइनमेंट है या नहीं है। तो एआई डिटेक्टर है। फिर आप यहाँ पे समरी है। अब उस फाइल को हम यहाँ से ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करने के बाद उसके समरी भी हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। इसमें भी समरी का ऑप्शन है जो हमने प्रीवियस टूल में बताया था। तो उस असाइनमेंट का समरी हम यहाँ पे बनाकर दिखा सकते हैं। अब देखिए ये समरी बनकर आ गया इस तरह से, ये समरी बनकर हमारा तैयार हो। तो ये टूल था। अब लास्ट टूल एक है, उसको दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद हम टाइम देंगे आपको। अब ये लास्ट टूल में गो ग्रेडर है, इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे और फिर टाइम देंगे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द गो ग्रेडर यू कैन यूज इट। सो गो ग्रेडर हियर। अब इसके लिए आपको साइन अप करना होगा। इजी ग्रेड, ग्रेड क्विज एंड ग्रेड रूब्रिक। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्विजेज कर लेते हैं। आप इंपोर्ट फ्रॉम द गूगल क्लासेस, तो गूगल क्लास से आपको कंटिन्यू विद द गूगल, और जो भी डेटा है आपका तो उस गूगल क्लास से ले सकते हैं। यहाँ पे अभी चल रहा है। क्रिएट द क्लास, इजी, import the data from the Google class and correct this one. Just select the mail, then continue. अब ये हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है, और ये इंपोर्ट हो गया। अब ग्रेडिंग आप देखिए यहाँ पे असाइन कर देंगे रूल। अब मिडिल है, हाई स्कूल है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ से हम ले लेंगे। फिर असाइनमेंट आ जाएगा, टेस्ट कोर्स आ जाएगा आपका, और इस तरह से सारे डेटा आ जाएगा, और आप इसको बना लें। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, देख लेंगे हम कंक्लूड का क्वेश्चन पर जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सो नाउ ऑल टूल्स के बारे में आपने देख लिया, ये सारे टूल्स है जो कॉमन आपको देखा आपने। तो हम मैं 10 मिनट रह गया, क्वेश्चन आंसर भी जरूरी है। सो नाउ कंक्लूडिंग, just I'm going to conclude this session and open the platform for the general discussion कि embrace AI as a partner in education, transformative power, a revolutionized feedback grading and analytics that empowering the educator to focus on the what matter most and enriching every student learning journey. Second one, collaborative success. True success depends on the ethical integrations, meaningful human AI collaborations, and continuous refinement based on the real world education need. And last, bright future ahead. The future of education is smarter, fairer, and more personalized powered AI technology that amplify human wisdom rather than the replacing it. So dear participants, now प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द जनरल डिस्कशन। देखिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि डियर पार्टिसिपेंट्स, नाउ प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द जनरल डिस्कशन। वी हैव ओनली 10 मिनट्स सो दैट वी कैन डिस्कस इट। कोई फीडबैक, कोई क्वेरी आपके माइंड पे है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। So, sir, यस, what are the basic terminologies used in AI? व्हाट डू मीन बाय बेसिक टर्मिनोलॉजी? Terminologies. What are the basic terms for the students? For the students, AI capabilities, AI tool,
AI, yes, so many tools are available and so many terms for the AI. Tools can be used as a terminology, right? Yes, yes. Yes, AI okay. tool, Thank you. the term. Okay. Thank you. Any more queries, dear participants? Feel free to ask question in your, जो भी कुछ आपके माइंड पे है आप पूछ सकते हैं, मतलब Thank you very much, sir. So the participants are putting their queries in the chat box. So I would like to read from the chat box, sir. So the first Okay, query sure. we are having from Ritika Mehra. Yeah. How can AI feedback improve learning outcome for slow learners? Okay. First, you have to identify the slow learner. When you are going to teach the student, you can provide the online material, and online the students are not getting anything. So immediately you can take the feedback. You speak a sentence and immediately you can take the feedback from the student or in the same class. If you are getting the immediate response from the student feedback, then you can analyze it. You can put the data online. So many things are there. Just you can ask the student to give the data. They will upload the data immediately in real time. Just remember, in the real time. If you are using the real time, then it will be very good. I think you satisfied or not? Or anything more you want? Much informative, sir. Okay. And the other question I would like to take from Mr. Rachit Kadian. So he's saying, sir, how can teachers strategically combine AI grading tool to enhance both assessment efficiency and student learning? Okay. देखिए, आप स्टूडेंट के एफिशिएंसी को इनहेंस करना चाहते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं और पूरे साल पढ़ा दिया, पूरे सेमेस्टर पढ़ा दिया, पूरे सेमेस्टर पढ़ाने के बाद आप फीडबैक लेते हैं, तो फीडबैक का कोई मतलब नहीं बनता. दैट फीडबैक विल बी यूजलेस. एंड इफ यू आर टीचिंग राइट नाउ, आफ्टर द टीचिंग you are getting the feedback, analyzing what amount of percentage a student got or not. If you analyze the data after one class, so in the next class you can make the strategy, change the strategy to teach the student. In this way you can improve or utilize the concept of it. दो Thank चीजें you, sir. देखिए, एक बात और कंफ्यूज कर रहे होंगे कि जो मैनुअल ट्रेडिशनल उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो टाइम कम है, तो इसीलिए एआई का यूज किया जाता है कि इमीडिएटली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई सो दैट दे कैन मेक द फीडबैक और फीडबैक फॉर योर स्टूडेंट. ओके. सुकी सब्जी खानी. So another question we are having from Ms. Sakshi. How effectively can grade scope support the evaluation of subjective or descriptive response? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि दो एस्पेक्ट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. It is objective, it's okay, no problem. Whatever answer you are giving, you will get the answer. You get the grade. But in the case of subjective, you have to feed the text so many fabric, and the text will match. But some student idea is different from that one. There will be a problem. But if you are able to train the machine, AI machine, by giving the various categories of answer in the subjective, then it will be very good. अदरवाइज कहीं ना कहीं देखिए, नो डेटा नो एआई. सो जितना ही ज्यादा डेटा देंगे उतना ही ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी. अदरवाइज डेटा की कमी है तो एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी. ठीक है ना? So sir, one more question from Munish Mohammed. Nowadays, students are using AI tools like ChatGPT as a search engine like Google, even in research too. What is your point of view of this? Go with the Google or with the ChatGPT as a search engine? बहुत ही बढ़िया. देखिए, चैट जीपीटी आने से पहले हम गूगल का यूज करते थे.
चैट जीपीटी भी वही काम करता है, गूगल का ही यूज करता है, लेकिन चैट जीपीटी उसको कस्टमाइज करके दे देता है। जैसे मैंने चैटबॉट बनाया, आपको दिखाया आपने, तो चैटबॉट में हमने क्या किया था कि बैकग्राउंड में गूगल ही यूज किया था। तो जो भी चैट जीपीटी है या जो भी बॉट है, वो सारे के पीछे जितने भी वेब है, वो वेब से ही डेटा उठाता है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज करके आपको दे देता है। अब दूसरा सवाल है कि क्या हम इसको रिसर्च में यूज कर सकते हैं या नहीं, whether you can use it in the research. So for using in the research, this is another big topic. If you are going to give the credit, giving the citation, there is no problem, no ethical issues, no plagiarism. But if you are not giving and not citing data generated from ChatGPT, then that is the big problem. So ChatGPT, all are taking data from the webs and they are customizing according to your requirement. ओके, सो दिस माय वाई पॉइंट, यू कैन यूज, कोई टूल बना है तो उसको यूज करना चाहिए, लेकिन फेयरनेस के साथ यूज करना चाहिए। अगर रिसर्च में यूज करते हैं तो आप बताइए, यू कैन साइट, है ना, क्योंकि जब टूल बना है तो आपको यूज तो करना ही है, लेकिन आपको फेयरनेस होना चाहिए। जी, Very informative, sir. And with this, we will be taking the last question of the session from Ms. Anurupa Ganguly. Can grade scope check plagiarism of assignment submitted by the student? How we can bring our students back to reading books and making notes? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आज के डेट में कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ना चाहता है, सब ऑनलाइन कर रहे हैं। इट इज वेरी टीडियस टास्क टू कन्विंस द स्टूडेंट। Yes, one solution in my mind. If you are teaching in your class in different ways that is not available online, then they will attend your class. But in the case of book, all books are available online. So a student and every people are asking the student to read the content from the web. So जो हर के पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन से पढ़ लेते, तो रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक and the mobile phone is equally good. Very good, sir. Thank you so much, sir. And with this, I like to take a moment, first of all, for the apologies of any discrepancy previously happened. And now, with the gratitude of my heart, we thank you so much, sir, for such an informative and engaging session, from chatbots to lesson plan to AI detection. It was immensely informative and one of the wonderful and informative session for the day. With this, I would like to call Dr. Shruti Chopra, Associate Professor, DBIT, to extend the vote of thanks to Professor Mansaf Alam as we conclude the 6th session of our 5-day FDP on enabling teachers with AI tool and informative approaches for effective learning. Ma'am, over to you. Mr. Rohit and Dr. Shruti, before you convey vote of thanks, let me convey thanks to Professor Mansaf Alam from bottom of my heart. It was really a wonderful session, right? I have attended this complete session, and many things which I did not know prior to this session, I could have understood those things. Thank you so much for such a session, sir. And we will continue with such kind of sessions, and I am sure your support will be there for our college as normally it is there. Thank you so much once again, Mansaf sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप को सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक दो वर्ड और बोलूंगा मैं जी। that is my concluding remark. We all are teacher. Right. So teaching is not a profession. As per my opinion, teaching is a responsibility. हमारे सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट का करियर होना चाहिए। टीचर आर नेशन बिल्डर। देश को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान टीचर का होता है। वो कैसे? देश को चलाने के लिए पीएम किसी न किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, स्टेट को चलाने के लिए सीएम किसी न किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्टूडेंट होंगे, डीएम किसी न किसी यूनिवर्सिटी के टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब जो हम स्टूडेंट को प्रोड्यूस करते हैं वो कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान होता है। तो वी टीचर आर द नेशन बिल्डर।
So our responsibility to teach the student very carefully, give the correct informations, स्टूडेंट को मदद करना, और जब स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। टीचर को हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू लर्न। अगर आपको लर्न करते रहेंगे, एक इक्वेशन को याद रखिएगा, नॉलेज इक्वल टू 1 by ego. As you increase the ego, you will decrease the knowledge. So decrease the ego, increase the knowledge. Thank you very much for listening me. थैंक यू मनसाब सर। ये वाला आपका जो है ना, कॉपीराइटेड आपका सेंटेंस है। जी जी जी, कॉपीराइटेड है। थैंक यू। यस डॉक्टर श्रुति, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Respected dignitaries, faculty members, and dear participants, I, Dr. Shruti Chopra, Associate Professor at Department of Management Studies, deem it a great privilege to represent DBIT, as I'm here to thank all those whose contributions and efforts have made this faculty development program conducive. We extend our heartfelt appreciation to Professor Mansaf Alam, Department of Computer Science, Jamia Millia Islamia, whose thoughtful, provoking session, practical demonstrations, and real-world examples have helped us better understand the transformative role of artificial intelligence in effective teaching learning process. Sir's expertise has not only enhanced our knowledge, but also motivated us to rethink and redesign our teaching learning methodologies. We are really grateful to our Reverend Professor Sajan M. George, Chairman DBIT, for his constant support and motivation. We would like to thank Father Biju and the management of Don Bosco Institute of Technology for constantly supporting and guiding us on the best possible way. We would especially want to express our thanks to our Director, Sir, Professor Vikas Rao Wadi, whose vision and commitment have greatly influenced the Institute. Your observation have shed light on our next steps. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated faculty members headed by Professor Shalu Tandon, Vice Principal, making it a result-oriented team. We also appreciate the dedicated efforts of our conveners and co-conveners, organizing committee, and all the coordinators for their hard work and meticulous planning that ensure the smooth and successful conduct of the day. We are thankful to Dr. Sanjay Kumar Singh, our registrar. We are also thankful to Dr. Asjad Usmani, HOD Management, Dr. P.K. Nayak, HOD Commerce, Dr. Amandeep Singh, HOD IT, Program Coordinators, Dr. Santosh Kumar Singh, MBA, and Ms. Charanpreet Kaur, MCA. Special thanks to our anchors. Thank you so much to all those who have participated, attended, and contributed to this event. Your presence and active engagement have made this day a resounding success. Your support is there, the cornerstone of our vibrant academic community. Thank you all and wish you a pleasant evening. Thank you so much. मनसाब सर, तकरीबन 500 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे। अच्छा, 500, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा, काफी पार्टिसिपेंट्स आ गए। 293 तो अभी वोट ऑफ थैंक्स में भी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर, और मिलेंगे सही हमने पढ़ाया नहीं, एंजॉय किया मैंने। राइट सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, बाय। I would like to request all the participants to please turn on their camera so our tech team can take a photograph with our esteemed guests. With this, I would like to conclude for this session, and we will be stay tuned for another informative and interesting session for tomorrow. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much, sir. Sir, you can leave now. Okay. Again, thank you, sir, Thank you for very being much. with us. Thank you very much.